Hi everyone, welcome to my channel. My name is Upasna Luthra. I'm Verbal Ability and GDPI trainer. So this is a series, Article Dive Live, where I help you understand reading comprehension on various subjects. There's a weekly theme to these articles, and this week's theme is going to be philosophy. As you all know that philosophy is a subject that we haven't really studied in school, or most of the students have not studied in college. So whenever we get an RC based on philosophy in CAT or other exams, we feel that we are not well versed with these terms, right? So this is with the aim of building that foundational knowledge around the terminology. Okay, and like always, let's say this that we are going to learn something new about the world today. All right, let's begin. So, the session is titled The Sublime Edmund Burke on the feeling thunderstorms give you. And I've sourced this from Philosophy Break. If you want, you can directly go to the source, or you can also access this article in PDF format, which is available on WhatsApp group. And the link to that WhatsApp group is in the description. You can join the group and read there. Okay, all the previous PDFs are also available there. Right. Have you ever felt a thrill during a thunderstorm or before a dark, looming mountain range? ठीक है, तो यहाँ पे हम साथ साथ वर्ड्स भी नोट करते जाएंगे विच आर गुड वर्ड्स पॉसिबली यू न्यू फॉर यू. सो क्या बोल रहे हैं कि क्या कभी आपने थंडरस्टॉर्म के वक्त वो थ्रिल वाली फीलिंग एक्सपीरियंस की है? ठीक है, एक्साइटमेंट एंड फियर का मिक्सचर. Awe is also wonder कि क्या when you came across a dark looming mountain range. Looming क्या होती है? Which is really big, very tall, मतलब it is overpowering. आप उसके सामने बहुत छोटे हैं. Okay, so have you come across any dark looming mountain range and have you felt that feeling of wonder? Okay, then then you have experienced what philosopher Edmund Burke calls the sublime. तो अगर इस तरह का कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है, if you have felt these things, then you probably will understand what Edmund Burke means by the sublime. So you're home at night when suddenly the sub bass boom of a thunderclap splits the atmosphere in two. तो सब बेस क्या होता है? बेस इज लो फ्रीक्वेंसी साउंड एंड सब बेस आर द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड्स, मतलब बहुत डीप साउंड्स which we can hear, the human can hear. Okay, so lowest frequencies. तो जैसे जब there's lightning और थंडर क्लैप, ठीक है, तो कितनी एक डीप और डरावनी सी साउंड आती है ना, सो दैट इज व्हाट इज रेफर टू एज सब बेस बूम ऑफ थंडर क्लैप. ओके, ऐसा लगता है जैसे द एटमोसफेयर और द स्काई इज गेटिंग स्प्लिट इन टू. You rush to your window as rain begins to cascade down from the darkness above, and trees tremble and bend in the billowing wind. तो ये देखते हैं, what is cascade? Cascade होता है to flow down, ठीक है, धीरे धीरे नीचे आना, right? And what is billowing? Billowing is also which is creating a lot of force. ठीक है, so that sort of wind. तो ये सीन पेंट कर रहे हैं नाइट का, when there is thunder, when there is rain, when there's wind. Water hammers against the glass. So hammer यहाँ पे क्यों यूज किया है? क्योंकि वो जो साउंड होती है वो लिटरली ऐसे लगती है जैसे कोई हैमर कर रहा है. वाटर इतनी फोर्स से गिर रहा होता है विंडो पे दैट इट फील्स लाइक समवन इज हैमरिंग. ओके, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इल्यूमिनेट्स द वर्ल्ड इन अ ब्लाइंडिंग वाइटनेस. तो जब वो बिजली चमकती है दैट इज ब्लाइंडिंगली वाइट. अब यहाँ पे नोट करिए द वर्ड लाइटनिंग. यू मस्ट नो दैट लाइटिंग और लाइटनिंग में क्या फर्क है. लाइटिंग विदाउट द एन विल मीन नॉर्मल, जैसे हम लाइट्स लगाते हैं, है ना, इवन दिवाली पे लाइट्स लगाते हैं, सो दैट इज लाइटिंग. द लाइटिंग इज नॉट सफिशिएंट इन द रूम.
ठीक है, ओके। उसके अलावा लाइटनिंग क्या होता है? लाइटनिंग इज बिजली। ओके, सो वाटर बहुत जोर जोर से गिर रहा है, आपकी विंडो पे, देयर इज लाइटनिंग। ओके, बिफोर अनदर eardrum shattering cacophony of sound accompanies the plunge into a deeper darkness। और फिर एक और बार वो बिजली की आवाज आपको सुनाई देती है। नाउ सी साइंटिफिकली ऑल्सो हाउ एक्यूरेट, वी ऑल नो, जिसने साइंस पढ़ी है, कि द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, है ना? तो पहले हमें वो दिखती है, वी सी दैट ब्लाइंडिंग वाइट लाइट, देन वी हियर द साउंड ऑफ दैट थंडर। ठीक है, तो cacophony क्या होता है? A harsh sound, a mixture of sounds which creates a harsh combination। ठीक है, इसी का एंटोनिम ऑपोजिट क्या है? सिम्फनी। सिम्फनी आपने सुना होगा ना, म्यूजिक को, मेलोडी को सिम्फनी बोलते हैं, जब दो तीन साउंड्स मिलके एक प्लेजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, सो दैट इज सिम्फनी। ओके, safe inside your warm home, you look out upon the immensity and power of the storm with a kind of excited, terrified glee। तो glee क्या होता है? Glee is that feeling that when you feel कि you are fortunate enough that you are not suffering that। ठीक है, so it's a happy feeling कि you are so fortunate that you are not suffering that। In some cases it also means that you are happy to see the others suffer what you are not suffering yourself। ठीक है, in this context it is basically कि बाहर storm चल रहा है but you are happy that you are safe inside your home। It's the same sort of feeling you might have when looking out at a raging ocean, or standing at the foot of an enormous waterfall, or when high in mist filled mountains you glimpse yet higher peaks towering above you, disappearing beyond the clouds। तो ये सेम एक्साइटेड, टेरिफाइड, ग्ली वाली फीलिंग आपको कब आ सकती है? जब आप एक रेजिंग ओशन को देखते हैं। व्हाट इज अ रेजिंग? रेज यूजुअली मीन्स एंगर, बहुत हाई एक्सट्रीम एंगर, बट हेयर रेजिंग ओशन मीन्स जिसकी वेव्स बहुत ज्यादा उठ रही हैं, है ना? सो दैट लुक्स लाइक अ रेजिंग ओशन, जिसमें बहुत टर्बुलेंस चल रही है पानी में। ओके, देन या फिर आप अगर एक इनॉर्मस वाटरफॉल के नीचे खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग एट अ सेफ डिस्टेंस बट यू कैन फील दैट इनॉर्मस वाटरफॉल। और या फिर आप मिस्ट फिल्ड माउंटेन्स में खड़े हैं, एंड देन यू सी, यू नो, इवन हायर पीक्स ऑफ माउंटेन्स which are disappearing beyond the clouds। If you've ever felt the delightful mix of exhilaration, awe, and fear such moments produce, then you've experienced what 18th century philosopher Edmund Burke calls the sublime। अगर आपने इनमें से कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, if you felt the mixture of emotions, exhilaration is excitement, awe is wonder, and fear you already know। तो इस तरह के मोमेंट्स में जो ये इमोशंस का मिक्सचर क्रिएट होता है, इफ यू हैव एवर फेल्ट दैट, देन यू प्रोबेबली अंडरस्टैंड व्हाट द सबलाइम इज। 18th सेंचुरी मीन्स कि 1700s के ईयर की बात हो रही है। ओके, what is the sublime? Now they are defining what sublime is. The sublime for Burke is an aesthetic experience that occurs when we encounter phenomena that, due to their immensity or raw power, overwhelm and astonish our senses। सो बर्क कैसे डिफाइन करते हैं सबलाइम को? कि इट्स एन एस्थेटिक एक्सपीरियंस, मतलब ब्यूटी वाला। ठीक है, इट्स फिल्ड विद ब्यूटी। जब वो कब होता है? जब हम ऐसे फिनोमिना को एनकाउंटर करते हैं जिसमें या तो उनकी इमेंसिटी, वो कितने बड़े हैं, देयर स्केल और देयर इम्पैक्ट, है ना, और देयर रॉ पावर, जैसे नेचर, एंड इट ओवरवेल्म्स, मतलब हमें फ्लड कर देता है वो इमोशन से। वी आर फिल्ड विद सो मेनी इमोशंस एंड इट एस्टोनिशेस आवर सेंसेस, सो दैट इज व्हेन वी फील द sublime। I think exhilaration is a good word which you can note from here. Then aesthetic is a word you must know, and overwhelm is also good। ठीक है, चलिए next। In his concisely titled 1757 treatise, A Philosophical Inquiry,
into the origin of our ideas of the sublime and beautiful, Burke writes. तो ये उनकी एक वर्क की टाइटल दिया हुआ है, अ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ द सब्लाइम एंड ब्यूटीफुल। तो उसमें क्या लिखते हैं बर्क? द पैशन कॉज्ड बाय द ग्रेट एंड सब्लाइम इन नेचर when those causes operate most powerfully is astonishment। तो जो हम नेचर के एलिमेंट्स को जब हम एनकाउंटर करते हैं तो यूजुअली हमें क्या फीलिंग फील होती है? एस्टॉनिशमेंट। ओके, दैट इज ग्रेट सरप्राइज। And astonishment is that state of the soul in which all its notions are suspended। और जब हमें इस तरह का ग्रेट सरप्राइज फील होता है तब हमारे अंदर बाकी सारी चीजें बंद हो जाती है, रुक जाती है, विद सम डिग्री ऑफ हॉरर। और हमें उसमें थोड़ा सा हॉरर का एलिमेंट भी फील होता है। In this case, the mind is so entirely filled with its object that it cannot entertain any other, nor by consequence reason on that object which employs it। कि जब हमें कुछ इस तरह का एस्टॉनिशिंग ऑब्जेक्ट दिखता है, नाउ नॉट ऑब्जेक्ट रियली, मतलब लिटरली ऑब्जेक्ट की बात नहीं है यहाँ पे, बट जो भी हमें नेचर का कोई भी फिनोमिनन दिखता है विच क्रिएट्स दिस फीलिंग ऑफ एस्टॉनिशमेंट प्लस अ लिटिल बिट ऑफ हॉरर, तो हमारा माइंड बाकी सारी चीजें पॉज कर देता है, बाकी सब मोशन सस्पेंड कर देता है, एंड वी आर नॉट एबल टू एंटरटेन एनीथिंग एल्स। हम उस टाइम उस फीलिंग में कंप्लीटली लॉस्ट होते हैं। ठीक है, Hence arises the great power of the sublime। और इससे sublime की great power निकलती है कि how it can totally overpower our senses। कि sublime हमें कितना deeply affect करता है, that is where the power of sublime lies। Okay। Hence arises the great power of the sublime, that far from being produced by them, it anticipates our reasonings and hurries us on by an irresistible force। कि that sublime tells us कि मतलब उसे पता होता है कि this is what our reason is, this is what our reasoning is for feeling, such mixture of emotions, and that feeling of sublime hurries us by an irresistible force। और वो जब हमें वो फीलिंग हो रही होती है sublime की, तो it is very irresistible, we can't resist it, it is beyond our control। Okay। Astonishment, as I have said, is the effect of the sublime in its highest degree। The inferior effects are admiration, reverence and respect। So क्या कह रहे हैं कि जो astonishment है वो sublime का highest emotion है, which sublime produces। ठीक है, highest degree। और उससे कम inferior इफेक्ट्स क्या हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, मतलब छोटे लेवल के, दोज आर इमोशंस लाइक एडमिरेशन, रेवरेंस एंड रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि बर्क इज नॉट सेइंग कि ये इमोशंस इंफीरियर हैं, एडमिरेशन फील करना, रेवरेंस, रिस्पेक्ट, नो, ही इज नॉट कॉलिंग दीज इंफीरियर, बट ही इज सेइंग कि compared to the you know degree of emotions which sublime is producing, astonishment सबसे highest degree है, और बाकी छोटे लेवल पे या as side effects you can say admiration, reverence and respect वाले emotions हैं। Okay। The sublime produces an experience beyond mere beauty। तो अगर हम मान लीजिए कोई सुंदर चीज देखते हैं, अगर, है ना, इफ वी एनकाउंटर समथिंग ब्यूटिफुल इन आवर लाइफ, तो जो इमोशन हमारे अंदर प्रोड्यूस होता है सबलाइन को एनकाउंटर करने पे, समथिंग इज एक्सपीरियंस विच इज बियॉन्ड सिंपल ब्यूटी। ठीक है, सो बर्क थिंक्स द सबलाइम कैन राउज आवर स्ट्रॉन्गेस्ट पैशन। राउज इज अ गुड वर्ड, राउज होता है उसको स्टिम्युलेट करना, जगा देना। तो बर्क कहते हैं कि सबलाइम में ये शक्ति है, दिस पावर, कि वो हमारे अंदर के स्ट्रॉन्गेस्ट पैशंस को जगाए, होल्डिंग अ ट्रांसफॉर्मेटिव पावर
that distinguishes it from mere beauty. और sublime में एक ट्रांसफॉर्म कर देने वाली पावर है. हो सकता है अगर आप एक फ्लावर को देखें तो शायद आपके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन ना आए. You simply feel the pleasure, you enjoy the beauty, and you move on. But इस तरह का, let's say, when you are looking at a looming dark mountain और खुद को उतना छोटा फील करते हुए in the presence of that big mountain, you may start some transformation internally. हो सकता है आपकी thinking में change आए कि I am just a little part of this big universe, that I need to fulfill something in this life in order to add to the bigger picture of this universe. ठीक है. या हो सकता है it may prompt you to let go of your feeling of difficulties कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है. when you see such, when you experience the sublime, you may start feeling that no, I am not really facing any problems, I am living a beautiful life. ठीक है. या अगर आप लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं, यू आर नॉट चेरिशिंग योर डेज, तो हो सकता है सबलाइम आपको वो प्रॉम्प्ट करे कि स्टार्ट एंजॉयिंग योर लाइफ, स्टार्ट चेरिशिंग योर लाइफ. ओके, राइट. So, beauty, Burke writes, typically involves small, delicate, pleasure inducing phenomena. An orchid, a curved china pot. तो बर्क क्या कहते हैं कि ब्यूटी क्या है? स्मॉल डेलिकेट चीज़ें जिससे हमें प्लेजर फील हो रहा है, जैसे कि ऑर्किड फ्लावर हो गया या अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ चाइना. यहाँ पे चाइना का क्या मतलब है? द यूटेंसिल्स. ठीक है, राइट. The sublime, by contrast, arises from things vast, powerful, threatening, things that could do us real harm. लेकिन जो sublime वाला इमोशन है वो किस चीज से प्रोड्यूस होता है? From things which are very powerful, threatening. They involve a certain degree of danger and they can potentially harm us. है ना? आप imagine करो, अगर आप एक raging ocean के पास खड़े हैं, if you step into that ocean, your life will be in danger. Similarly, that thunderstorm वाला scene, अगर आप अपने रूम के अंदर, घर के अंदर safe हैं, then fine. But if you go out, if you step outside, you will be immediately in danger. है ना? So, sublime has that vast, powerful, threatening है ना element, और उसमें there is a potential of real harm if we actually get into that situation. Crucially, however, while it involves dangerous things, the sublime should have no idea of danger connected with it. लेकिन sublime feeling हमें कब आती है? When when there is danger, लेकिन वी डोंट फील कि हम डेंजर में हैं. ठीक है, मतलब बाहर रेजिंग ओशन है, बाहर एक्सट्रीम थंडरस्टॉर्म है, बाहर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बट इनसाइड यू आर सेफ एंड यू फील दैट, यू डोंट फील दैट आइडिया ऑफ डेंजर कि हम इमीडिएट डेंजर में है, बट यू कुड बी. ठीक है. In other words, there should be no imminent danger to us. Imminent matlab which is immediate. कि हम exactly we are not in a dangerous situation. ठीक है. The thrill of the sublime arises when abstract terror occurs within the comfort of personal safety. So, एक abstract terror मतलब undefined terror. Actually हम danger में नहीं है, हम तो घर के अंदर safe हैं, but that danger is outside. तो वो हमें एक abstract terror feel होगा, which we are not exactly in the situation of that danger. We are in the comfort of our personal safety. So, watching the raging sea from the peace of the shoreline, rather than being thrown among the waves, feeling the relentless enormity and secrecy of the cosmos during a total eclipse, while safely inside Earth's atmosphere, being reminded of our tiny, precarious fragility without actually having it crushed. So, examples क्या दिए हैं बर्क ने? कि अगर हम एक शोर पे खड़े हैं,
है ना, और हम दूर से एक रेजिंग सी को देख रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट एक्चुअली बीइंग थ्रोन अमंग द वेव्स। सिमिलरली अगर हम एक टोटल एक्लिप्स को अर्थ के कंफर्ट से देख रहे हैं, वी आर नॉट एक्चुअली थ्रोन इनटू स्पेस, नॉट एक्चुअली इन द एक्लिप्स, ठीक है। सो इफ वी आर रिमाइंडेड कि हम कितने छोटे हैं इस यूनिवर्स के आगे, इस नेचर के आगे, प्रिकेरियस इज विच इज which can be destroyed any moment. So it's very delicate. Fragility is also similar, fragile. ठीक है? So without having it crushed, without being in that, you know, in that danger. So that is when we feel the sublime. As Burke writes, if the pain is not carried to violence and the terror is not conversant about the present destruction of the person, as these emotions clear the parts, whether fine or gross, of a dangerous and troublesome encumbrance, they are capable of producing delight. Not pleasure, but a sort of delightful horror, a sort of tranquillity tinged with terror, which, as it belongs to self preservation, is one of the strongest of all the passions. तो बर्क क्या कहते हैं कि जब वो डेंजर हो रहा होता है, तो when we feel that violence is happening outside, but we are not in pain directly due to that violence, ठीक है, when the terror is not conversant about the present destruction of the person, conversant होता है familiar, जब वो जो टेरर है that remains abstract, it is not familiar with the actual present destruction, है ना, और फिर जैसे ये इमोशंस आते हैं, दे क्लियर द पार्ट्स वेदर फाइन और ग्रोस ऑफ अ डेंजरस एंड ट्रबलसम इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस क्या होता है? ऑब्स्टिकल। तो एक these things, these dangerous situations जो बाहर से हम देख रहे हैं, अंदर से देख रहे हैं ना, जो बाहर हो रही हैं, so these are very troublesome encumbrances, dangerous encumbrances, इन्हें हम देख रहे हैं, so they are actually capable of producing delight, इनसे हम actually delight feel कर सकते हैं, pleasure नहीं feel होगा, but a sort of delightful horror, ठीक है, delight mixed with horror, a sort of tranquility, tranquility मतलब शांति, calm, tinged with terror, tinged मतलब हल्का सा उसमें shade of terror भी है, ठीक है, which as it belongs to self preservation is one of the strongest of all the passions। तो ये हमारा बहुत ही एनिमल वाला इमोशन, रॉ इमोशन निकालती है, दैट फीलिंग ऑफ कामनेस tinged with terror, हल्का सा उसमें टेरर, क्योंकि हमारे अंदर एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ लिविंग बीइंग, एज एन एनिमल, वी हैव दैट फीलिंग ऑफ सेल्फ प्रेजर्वेशन कि हमें अपने आप को डेंजर से बचाना है। तो जब बाहर डेंजर है, हम घर के अंदर सेफ हैं, तो हमारे अंदर हल्का सा ये फीलिंग ऑफ सेफ्टी, येट इट इज tinged with a little terror, ठीक है, तो दैट इज द sublime। Indeed, unlike beauty, the sublime activates something deep in us, a violent emotion of the nerves stemming from a primal need for survival। कि जो ये sublime है, ये ब्यूटी के जैसा नहीं है। ब्यूटी तो क्या है? ब्यूटी प्रोड्यूसेस इन अस दैट फीलिंग ऑफ प्लेजर, है ना, लेकिन सबलाइन हमारे अंदर कुछ डीप मूवमेंट करता है, ओके, we feel that we need to, you know, so it moves something deep in us, a violent emotion of the nerves, so it plays with our brain, our nerves, और ये कहाँ से आता है? From that primal basic need of survival, confronted by mind defying power, shaken out of our puny human complacency, dormant parts of our psyches get a workout, we feel alive। तो क्या होता है जब हमारे अंदर ये माइंड डिफाइंग पावर आती है ड्यू टू द फीलिंग ऑफ सबलाइन, तो इट शेक्स अस आउट ऑफ आवर ह्यूमन कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी क्या होता है? दैट फीलिंग ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन, even if you're not doing even if you're not reaching your full potential। So मतलब चलता है एटीट्यूड, कभी कभी वी गेट इनटू दैट
ऑटो मोड की, ठीक है लाइफ चल रही है, वी डोंट हैव टू ट्राई हार्डर, सो दैट इज कॉम्प्लेसेंसी। प्यूनी मतलब इनसिग्निफिकेंट, पुअर, स्मॉल। तो जब ऐसा सबलाइन आता है तो इट शेक्स अस आउट ऑफ दैट प्यूनी कॉम्प्लेसेंसी। डोमेंट मतलब सोए हुए, पार्ट्स ऑफ आवर माइंड साइकी, दे गेट अ वर्कआउट, वो जागते हैं, दे गेट टू डू सम थिंकिंग एंड वी फील अलाइव। This is why infinity itself, something of which we cannot perceive the bounds, is perhaps the strongest source of the sublime. तो इसलिए शायद जो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि ये यूनिवर्स इनफाइनाइट है, या टाइम वाइज लाइफ इनफाइनाइट है, दैट लाइफ विल ऑलवेज गो ऑन, ठीक है, दैट, और इफ वी से दैट यूनिवर्स इज इनफाइनाइट, सो दैट क्रिएट्स दैट सेंस ऑफ सबलाइम इन अस, ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते अपनी लाइफ टाइम में, लेकिन it creates that sense of sublime. So Burke writes, infinity has a tendency to fill the mind with that sort of delightful horror, which is the most genuine effect and truest test of the sublime. कि जो infinity है वो हमारे अंदर एक sort of delightful horror produce करती है, ठीक है, and it is the most genuine effect and the truest form of sublime. कि वो जो इन्फिनिटी को अगर आप फील करेंगे तो वो जेन्युइन फॉर्म ऑफ द सबलाइम है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सबलाइम्स इन्फ्लुएंस ऑन रोमांटिसिज्म। सो रोमांटिसिज्म क्या है? दिस इज नॉट अबाउट द कपल लव, इट्स अबाउट द एरा ऑफ रोमांटिसिज्म। So it was in late 1700s and beginning of 1800s, ठीक है, तो उस टाइम पे थी ये रोमांटिसिज्म एरा। So nature was appreciated and common man was appreciated by you know authors and poets उस sense में। Perhaps unsurprisingly, the feeling captured by Burke's concept of the sublime has been a central point of inspiration for poets, painters, and musicians over the centuries. तो ये जो बर्क का कॉन्सेप्ट है sublime का, that has always been an inspiration for poets, painters, and musicians, जितने भी artists रहे हैं, and held particular importance for the artistic movement of romanticism. और ये जो sublime था, ये especially romanticism की movement में बहुत it was very important. In an essay on the sublime, the romantic poet William Wordsworth writes that, ओके, आई एम श्योर कि विलियम वर्ड्सवर्थ से हम सब फेमिलियर होंगे, टेंथ क्लास तक सबने इंग्लिश पढ़ी है, और उसमें हमें वी हैड डेफिनेटली हैड अ वन और टू पोम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, तो इनकी हमने पोम्स पढ़ी है। तो ही वॉज ऑल्सो अ पोएट ऑफ दैट रोमांटिक एरा। तो विलियम वर्ड्सवर्थ क्या लिखते हैं? द माइंड ट्राइज टू ग्रास्प एट समथिंग टूवर्ड्स विच इट कैन मेक अप्रोचेस बट विच इट इज इनकेपेबल ऑफ अटेनिंग। तो ये बिल्कुल डेफिनेशन ऑफ इन्फिनिटी हो गया ना, कि हमारा माइंड कोशिश करता है उस चीज को अप्रोच करने की, उसके पास जाने की, है ना, टू ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड दैट। It can be physically approach also or mentally approach also. But it is not capable of getting that. ठीक है? So infinity is the best example of this, but it can apply to anything which creates the feeling of sublime. Wordsworth evokes this fleeting brush with greatness, the intangibility of the sublime, in his 1798 poem, Lines Written a Few Miles Above Tintern Abbey. तो पहले ये लाइन समझते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो है वो इस फीलिंग को ऑफ ट्राइंग टू अप्रोच समथिंग बट इनकेपेबल ऑफ अटेनिंग इट, इस फीलिंग को फ्लीटिंग ब्रश विद ग्रेटनेस, मतलब फ्लीटिंग होता है टेम्पररी, ब्रश मतलब एनकाउंटर, ग्रेटनेस यहाँ पे इंफिनिटी की बात की गई है। द इंटेंजिबिलिटी ऑफ द सबलाइम, टैंजिबल होता है जिसे हम अपनी सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, है ना, थिंग्स लाइक दैट।
but sublime cannot be perceived by our senses. It is intangible. ठीक है? तो इस बात को विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी इस पोम में लिखते हैं, which is titled Lines Written a Few Miles Above Tintern Abbey. Of aspect more sublime, that blessed mood, in which the burden of the mystery, in which the heavy and weary weight of all this unintelligible world is lightened. तो ये एक पैराग्राफ लिया गया है फ्रॉम द पोम। इसमें वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि जो सबलाइम है, इट्स अ ब्लेसेड मूड। ठीक है? और इसमें जो बर्डन ऑफ द मिस्ट्री है, जो हैवी वियरी थकाने वाला वेट है ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड, की दुनिया में कितना ही कुछ है, देयर सो मच इन दिस वर्ल्ड which we cannot really comprehend, unintelligible है ना, which cannot be comprehended, is lightened. तो सबलाइन फील करके वो जो बर्डन ऑफ द मिस्ट्री है या वेट ऑफ दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड है, वो लाइट हो जाता है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द सबलाइन एंड फिलोसफी का हमने थोड़ा सा शुरुआत किया है अभी। I'll be giving you lots of articles on philosophy because I feel this is a subject we need to understand. But there's a tip for you guys, that use these articles for positive transformation. If you feel कि आपको ये आर्टिकल्स रीड करके समथिंग नेगेटिव इज स्टरिंग इन यू, कुछ नेगेटिव थॉट्स जनरेट हो रहे हैं, प्लीज रीच आउट, प्लीज टॉक टू मी, कॉन्टैक्ट मी, आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल। ठीक है? देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर व्हाट्सएप, वहाँ पे मेरा नंबर भी अवेलेबल है पर्सनल, इन दैट ग्रुप आई एम द एडमिन। So please talk to me if you ever feel ki this is stirring something negative in you. Okay? All right then, because philosophy has that power, it's my personal experience. That's why I'm telling you, especially for people who are really sensitive. Philosophy sometimes, tends to get you on that track of thought, which is not really positive. Okay? So let's talk about it if you ever get there. All right, then, that was all from me, and that is it for the session. I'll see you in the next session now. Bye bye.